Hello dear students, in last lecture illustration number 30 is completed. Now next the illustration number 31. A company produce a certain type of item in its two different factories A1 and A2 in the proportion of 60% and 40% respectively. It means P of A1 and P of A2. The proportion of defectives in the production of these factories are 2% and 3% respectively. It means production of first factory and defective item, production of second factory and defective. It means conditionality is given. D, defective item is considered by D. So D given that of A1 and D given that of A2. Okay. Now next. One item is randomly selected from mixing the item produced in two factories. दोनों फैक्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है उसको मिक्स कर दो and randomly one item is selected. Find the probability that this item is defective. Defective means production in factory A1 and it is defective, or production in factory A2 and it is defective. या तो फर्स्ट फैक्ट्री में से प्रोडक्शन होगा और डिफेक्टिव, एंड और सेकेंड फैक्ट्री में से प्रोडक्शन होगा एंड इट इज़ डिफेक्टिव. यानी कि डी A1 इंटरसेक्शन डी एंड A2 इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट. क्लियर? सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट A1, selected item is produced in factory A1. Selected item produced in factory A1. So probability is given 60%. P of A1 60 by 100 0.6. Now next event A2, selected item produced in factory A2. So P of A2 is 40% produce, 40 by 100 0.4. Okay. Now item is defective is considered by D. Event D is equal to the item selected from the total production, the item selected from the total production is defective. ओके, उसको हमने क्या कंसिडर किया? डी. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्रीज आर 2% and 3%. इट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज गिवन. इवेंट डी गिवन दैट ऑफ A1. ओके, item is produced from factory 1, then it is defective. Okay. The selected item is defective
when it is produced in factory A1. So probability is given 2%. P of D given that of A1 2 by 100 0.02. Now next event, D given that of A2. The selected item is defective when the produced in factory A2. The selected item is defective when it is produced in factory A2. So it is 3%. D given that of A2 3%, 0.03. Now next, find our question, find the probability that this item is defective. Defective, it means denoted by our D. P of D is equal to P of A1 intersection D plus P of A2 intersection D. क्योंकि D हमने ऑलरेडी डिनोट की है, the item selected from the total production is defective. ओके, A1 intersection D, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? ब्रैकेट P of D given that of A1 into P of A1 plus in another bracket A2 intersection D, जो कंडीशनलिटी हमारी रही थी उसे ही हम राइट करेंगे P of D given that of A2 into P of A2 होगी। जो कंडीशनली हमने बोला था डिनोमिनेटर है अपोजिट साइड जाएगी, तो क्या आ गया? न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट, पुटिंग द वैल्यूज P of D given that of A 0.02 into P of A1 is 0.6 plus P of D given that of A2 0.03, P of A2 0.4. So using calci 0.02 into 0.6 0.012 plus 0.03 into 0.4 0.012. So total 0.024. ये वो हमारा फाइनल आंसर। ओके, कि आइटम इज डिफेक्टिव फॉर द एनी फैक्ट्री A1 and A2 is 0.024. Here completed illustration number 31.
Now next, illustration number 32. There are 12 screws in a box of which 4 screws are defective. 12 में से 4 screw क्या है? Defective है. Defective, non-defective. 4 screw defective, remaining 8 screw non-defective. 2 screws are randomly selected one by one without replacement from the box. Okay, underline one by one without replacement. यानी कि 12 में से हम एक सिलेक्ट करेंगे, उसको साइड पे रख देंगे. रेस्ट ऑफ जो 11 रहे उसमें से एक रैंडमली सिलेक्ट करेंगे. क्यों? वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट है कि जो स्क्रू सिलेक्ट हुआ वो फिर से सिलेक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द स्क्रू सिलेक्टेड आर डिफेक्टिव. जो सिलेक्ट हुए दोनों स्क्रू क्या है? डिफेक्टिव. तो इक्वेशन कंडीशनलिटी से हमें राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम आंसर राइट कर सकते हैं. देखो, 2 screw out of 12 screw. Two screw out of 12 screw are randomly selected one by one without replacement. Then total outcome is given below. N is equal to 12C1 into 11C1. क्यों? वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट. फर्स्ट स्क्रू सिलेक्ट किया बॉक्स में से, उसको साइड पे रख दिया. नाउ रिमेनिंग रेस्ट ऑफ कितने रही? 11 स्क्रू. उसमें से अनदर नेक्स्ट स्क्रू हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो रिप्लेस नहीं होना चाहिए. सो 12 into 11 total N outcomes 132. Now both the screw are defective. Our event A is equal to selected both the screw are defective. Okay, both the screw are defective. Favorable outcome of event A is डिफेक्टिव. टोटल 4 स्क्रू, उसमें से 2 स्क्रू सेलेक्ट करना, बट कौन से मेथड से? वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट. 4 में से एक सेलेक्ट होगा, रेस्ट ऑफ 3 बचेंगे. उसमें से अनदर स्क्रू सेलेक्टेड 3C1. 4 into 3 total favorable outcomes is 12. Find the P of A. M by N 12 by 132 1 by 11. आप डेसिमल में भी आंसर राइट कर सकते हो. आफ्टर 0.4 डिजिट राइट करना. ओके,
ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन। ये कंप्लीटेड फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 32। Now next, in illustration number 33. There are 3 boys and 2 girls in a friend circle. Okay, 3 boys and 2 girls. Two persons are randomly selected from this friend circle. Okay, 5, 2. 5 में से आपको 2 फ्रेंड को रैंडमली क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फ्रेंड सर्कल 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट यानी 5 में से पहले हम एक फ्रेंड को सिलेक्ट करेंगे, उसको वापस बिठा देंगे, फिर से 5 में से हम उसको सिलेक्ट, यानी कि जो सिलेक्टेड फ्रेंड है वो दूसरी बार फ्रेंड सिलेक्ट हो सकता है। अर्लियर यूनिट सिलेक्टर फिर से भी वो सिलेक्ट हो सकता है। ओके, विथ रिप्लेसमेंट अंडरलाइन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट टू सिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग गाने के लिए उसको दोबारा हम खड़ा कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पर्सन इज अ बॉय, तो बॉयज़ में से सिलेक्ट होगा 3C1। एंड द सेकेंड पर्सन इज अ गर्ल्स, तो गर्ल्स में से एंड इंटरसेक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कंबाइंड इवेंट भी ले सकते हो। टू सिंग अ सॉन्ग, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ क्या है, सेपरेटिंग। ओके, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट, उस तरह से भी आप ए इंटरसेक्शन भी, और आपको सिंगल इवेंट में आंसर कंप्लीट करना हो तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, आपको 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। So 2 person out of 5 person are randomly selected. Okay, randomly selected 1 by 1 with replacement to sing a song. So total outcome is given below. फाइव C1 इंटू 5C1, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। देखो, यानी कि जो यूनिट पहले सिलेक्ट हुआ अर्लियर उसको आप दोबारा सिलेक्ट कर सकते हो। देन टोटल आउटकम्स इज 25।
फर्स्ट इज अ बॉय एंड सेकेंड इज गर्ल इज इट डिनोटेड बाई इवेंट ए. सिंगल इवेंट्स आप उसको डिनोट कर दो. इवेंट ए इज इक्वल टू selected first person is a boy and second person is a girl. Okay, out of two persons, first is a boy and second is girl. Favorable outcomes of event A is टोटल बॉयज़ 3, उसमें से एक सिलेक्ट होगा. टोटल गर्ल्स 2, उसमें से एक सिलेक्ट होगी. 3C1 into 2C1 एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमें क्या मिले? 6. फाइंड द इवेंट P of A is equal to M by N 6 by 25. Okay, 0.24. Okay, so selected first is boy and second is girl. Sing a song is probability 0.24. Here completed illustration number 33. Now next illustration number 34. टू बैलेंस डाइज आर थ्रो सिमिल्टेनियसली. आपको पता है टू बैलेंस डाइज थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या मिलेंगे? 36. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू डाइज शो द नंबर 3. एटलीस्ट यानी कि ए यूनियन बी फाइंड करना है. आप सिंगल इवेंट में भी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो और ए यूनियन बी लॉ ऑफ एडिशन फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो. यदि आपने ऑल आउटकम्स राइट किए हैं तो आप सिंगल इवेंट में कंप्लीट कर दो पी ऑफ ए. नहीं तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट डाइज शो द नंबर 3 इवेंट ए, सेकेंड डाइज शो द 3 इवेंट बी, बोथ द डाइज शो द नंबर 3 ए इंटरसेक्शन बी, देन आफ्टर यूज इन लॉ ऑफ एडिशन फार्मूला. ओके, एटलीस्ट. नहीं तो आप सिंगल इवेंट में भी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो. बोथ मेथड आर वैलिड. जो मैंने एक आपको बोली वो, दूसरी हम जो कर रहे हैं वो सिंगल इवेंट, एंड थर्ड जो आपको यहाँ पे दी हुई है ए डेस बी डेस, जो आपको सूटेबल लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आउटकम्स राइट डाउन. u इज इक्वल टू 36 इन कर्ली ब्रैकेट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3
2 4 2 5 2 6. Next 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. Next 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Next 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. And last row 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. curly bracket complete. Now n is equal to 36 outcomes. Now write in our question denoted by event A only for single event. At least one of the two dies, at least one of the two dies show the number 3. So the number 3. दोनों में से एक भी डाइस पे 3 नंबर हो तो भी चलेगा, ऐसा बोला आपको. तो चेक इट. फेवरेबल आउटकम्स of event A is m is equal to curly bracket at least दोनों में से कोई भी एक डाइस पे हमें क्या चाहिए 3. इन फर्स्ट रो 1 3, इन सेकेंड रो 2 3, इन थर्ड रो तो पूरे की पूरी रो आ जाएगी. देखो सभी में 3 है. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. नेक्स्ट रो 4 3, एक इस पैरे से एक जिसमें 3 है. नेक्स्ट रो 5 3 एंड लास्ट रो 6 3. हो गया आपका क्वेश्चन सिंपल. जो टेक्स्ट बुक में दिया वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, सिंपल मेथड हो गया. एक इवेंट में आपका आंसर आ गया. स्पेयर काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Favorable outcomes is 11. Find the P of A. 11 by 36. चेक कर लो आपकी टेक्स्ट बुक में, ये आंसर होगा. टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए क्या है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी मेथड है. ओके, ये कंप्लीट है इलिस्ट्रेशन नंबर 34.